हेलो 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 हेलो। हो गया। ओ भाई लोगों, आवाज आ रही है क्या? आ रही है ना? चलो परफेक्ट है। अरे मैं यार स्टूडियो सिलेक्शन लेता हूँ, उधर साली मुस्कान जाके बस गई यार। पूरी दुकानदारी लेके बैठी हुई साली, झूठ बोली मेरे को सुबह सुबह। अबे लेट क्या सुअर। तो क्लास ही चेंज हो गई यार। और ये नई क्लास इधर का मुझे कुछ सिस्टम ही पता नहीं है। बहुत एक्सपेरिमेंट करके आया बेटा, वो तो तुम लोगों का प्यार है, तुम्हारा नहीं सुअर। मेरा प्यार है कि आ गया, नहीं तो आज तो मैं गया ही था। क्या यार, चलो। वरना जैसे तुम जैसे दो कौड़ी के टुच्चे लोगों से मैं सुन लूं, सवाल ही नहीं। हाँ जी। लो ग्रीन दिख रहा हूँ। अरे यार पता नहीं मुझे इधर सब हाउ आर थिंग्स पुट ऑन। ये मैंने इधर फर्स्ट टाइम ही लेक्चर लिया बहुत टाइम बाद। हाँ जी। इसका मॉनिटर नीचे, हाँ ना यार। ऐसा ही क्या? अच्छा चलो, वो जान दे मैं कैसा लग रहा हूँ। खड्डे में जाए। ये इसके ऑन कैसे होता है भाई? चल जा बेटा। हेलो 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 हेलो। हाँ जी। चलो। आह, अरे काजल औरत, कहाँ जाएगी रे तू? तुम लोग डिजर्व करते हो, पता है तुमको? अब शादी कर लो तुम लोग, और मस्त औरतें बन जाओ, मामा बन जाओ। तुम्हारे अंदर वो सारे गुण आ गए हैं टॉन्ट मारने वाले। यस। हाँ। चलो भाई। बाकी मेरे भाई। लो यार। अच्छा बाय द वे, तुम मुझे क्या ताने मार रहे हो? खुद की अटेंडेंस देखो, साला 50% भी नहीं है। मुझे ज्ञान दे रहे बैठ के। अब तुम में से कुछ लोग बोलेंगे सर, हम तो आए ना, बाकी नहीं आए तो उसमें हमारा क्या? हम्म। नॉनसेंस। चलो करें स्टार्ट जरा। मैं पुणे आऊंगी आपसे मिलने, बट छोटी। मुस्कान मैम का क्लास नहीं है आज भी, क्यों? मैम ने बोला ऐसा? हम्म, वाह यार। हनी बस तेरे लिए लेट आया हूं मैं, सोच ले। BMW गिफ्ट कर दो। चलो बकवास बंद करो सालो। लो इधर देखना अब जरा। सो आप लेट हुए, आधे लोग भाग गए, लग जाए। बेटा इंस्टीट्यूट ने अगर ये कर दिया ना, कि आधे लोग, सोचो। चलो। तो यार कल हम लोगों ने क्वेश्चन 3 तक सॉल्व कर लिया था, है ना? 1 2 3 ये कंप्लीटली हो गए अपने। आज क्वेश्चन 4 एक बार यहां से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। चेक करो। सबसे पहले, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ different types of endorsements under the Negotiable Instruments Act, and how do they impact the transferability of negotiable instruments? तो बेसिकली आपको टाइप्स ऑफ endorsements लिखने हैं। अच्छा ये आप सब लोगों ने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा होगा, फुल एंडोर्समेंट के बारे में पढ़ा होगा, आप लोगों ने ब्लैंक एंडोर्समेंट के बारे में पढ़ा होगा, सैंस रिकोर्स एंडोर्समेंट के बारे में पढ़ा होगा, पार्शियल एंडोर्समेंट, रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, राइट?
ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट बेसिकली आपको लिखना है, एंड हाउ डू दे इम्पैक्ट दी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ नेगोशिएशन। हर इंस्ट्रूमेंट का अलग होता है, तो जैसे हम लोग टाइप्स एक्सप्लेन करते हैं साथ साथ में उसके नेचर भी हम लोग लिखते रहेंगे कि ट्रांसफरेबिलिटी पर क्या इम्पैक्ट आता है। ठीक है, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का है। चल लिखे आंसर। हाँ जी, करो भाई शुरुआत। हे प्रेरणा, व्हाट्सअप। लड़की सीएस बन गई भाई साहब, इज्जत देने का अब इसको। जब भी नेक्स्ट टाइम प्रेरणा लाइव दिखे ना, सब मैडम करके बोलेंगे। तुम साले दो कौड़ी के टुच्चे लोग। लिखो भाई। अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, various types of endorsements are as follows. Various types of endorsements are as follows. Must are as follows. First, full endorsement. First is full endorsement. लिखना, in this type of endorsement, in this type of endorsement, comma, the entire sum, in this type of endorsement, the entire sum, the entire sum is to be paid to, is to be paid to the new payee, paid to the new payee, paid to the new payee. Second, अच्छा सॉरी, इसमें and also the name of the payee is specified. इसी में लिख रहे हैं, and also the name of the payee is specified. Second, blank endorsement. Second is blank endorsement. In this, comma, the endorser signs the instrument, signs the instrument without actually writing the name of the endorsee. Without actually writing the name of the endorsee. Writing the name of the endorsee. Name of the endorsee. तो सब बस काफी छोटे छोटे लिखो अब तो। नेक्स्ट लिखना, restrictive endorsement. Restrictive endorsement. In this type of endorsement, in this type of endorsement, in this type of endorsement, comma, type of endorsement, comma, the endorser restricts the right of the endorser restricts the name the right of endorser restricts the right of the endorsee
the endorsee to endorse it further to any other party. To endorse it further to any other party. Any other party. Next, restrictive हो गया, partial endorsement. Next लिखना partial endorsement. Such endorsement transfers the right given in an instrument partially. Given in an instrument partially. Given in an instrument partially. Full stop. These endorsements are not considered valid in India. These endorsements are not considered valid in India. Next, conditional endorsement. Conditional endorsement. In this case, comma, the instrument. In this case, the instrument is honored. Instrument is honored only on fulfillment of certain conditions. Only on fulfillment of certain conditions. Fulfillment of certain conditions. Next लिखो sans recourse endorsement. बस बहुत है. sans recourse endorsement. लिखना इसमें. In this type of endorsement, comma, the word sans recourse is specified. The word sans recourse is specified on the instrument. Specified on the instrument by which the endorser refuses to accept the liability. Endorser refuses to accept the liability. Accept the liability. In case if the drawer, in case if the drawer defaults in its payment. Defaults in its payment. Done. चलो भाई, तो ये अपना 4A कंप्लीट हुआ.
है ना। अच्छा 4B, अब ये चेक करें मेरे साथ, differentiate between a distribution agreement, a franchisee agreement, and a dealer agreement, highlighting their features, key implications, and commercial significance. Do you really want me to dictate this? ये मतलब extremely straightforward question है ना, मतलब डायरेक्ट एक टेबल ही दी हुई है एक्चुअली में आपको, तो आप वो टेबल फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, और अगर आप चाहो तो तीनों के फीचर्स अलग अलग एक्सप्लेन कर सकते हो, पहले डिस्ट्रीब्यूटरशिप, बाद में डीलरशिप, और बाद में फ्रेंचाइजी, दैट इज ऑल्सो फाइन, है ना। यू स्टिल वांट मी टू डिक्टेट, तो मैं हाँ, मतलब ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मेरे को नहीं लगता इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसा आप बोलो। यस। अरे बताओ सुबरो, क्या करना है। ठीक, चलो आगे देखना, नेक्स्ट। Critically examine the significance of declaratory decrees under the Specific Relief Act. What is a declaratory decree? Declaratory decree वो डिक्री होती है। अच्छा सबसे पहले what do you mean by the word decree? Decree is nothing but the formal expression of the court, है ना, that's essentially a decree. दूसरा, जब आप कहते हो declaratory decree, मतलब उस डिक्री के थ्रू, राइट, why was June paper weird, almost सारे are straightforward questions, which is I think good. What is the problem in that? है ना। सो जो डिक्री के थ्रू हम लोग पार्टीज के राइट्स ऑब्लिगेशंस डिफाइन करते हैं या डिक्लेयर करते हैं, इज एसेंशियली इन द नेचर ऑफ अ डिक्लेरेटरी डिक्री। हाउ डू दे कंट्रीब्यूट टू प्रिवेंटिव जस्टिस एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस इन द इंडियन लीगल सिस्टम। सो बेसिकली आपको डिक्लेरेटरी डिक्री के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताना इस क्वेश्चन, है ना। सिंपल क्वेश्चन है, बट लिखते हैं। चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, सो आप इफेक्टिवली देखो, ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली लेंदी आंसर है, बट विल ट्राई एंड क्रंच इट एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज 5 मार्क्स का है। चलो लिखो जरा। द वर्ड डिक्लेरेटरी डिक्री मीन्स, द वर्ड declaratory decree means declaratory decree means the decision of the court, means the decision of the court, decision of the court by which, by which the court determines, the court determines the rights and obligations, determines the rights and obligations of the parties to the dispute, of the parties to the dispute, in order to avoid, in order to avoid future disputes, future disputes। डन। इसके बाद लिखें advantages of declaratory decree। एडवांटेजेस लिखते जाओ जल्दी से। declaratory decree, first,
हाँ जी, फर्स्ट it is used by it is used by the contracting parties used by the contracting parties to determine to determine the interpretation of various clauses in an agreement clauses in an agreement if there is any ambiguity if there is any ambiguity there is any ambiguity. Second, reduces the reduces the possibility reduces the possibility of a litigation in future possibility of a litigation in future. Next, it can aid it can aid clarity in various property matters in various property matters various property matters regarding title or its possession regarding title or its possession. नेक्स्ट एक आध और लिख लो. It also helps it also helps and adds more clarity in maintaining and rectifying government records government records. अच्छा, इसके अब डिसएडवांटेजेस लिख ले. डिसएडवांटेजेस. फर्स्ट, declaratory decree is always considered a secondary remedy. Declaratory decree is always considered a secondary remedy as where the court has an alternative as where the court has an alternative comma, it will grant some other remedy over this. It will grant some other remedy over this.
Second, it does not grant any immediate relative, any immediate relief. It does not grant any immediate relief. Any immediate relief, as in the case of a suit. As in the case of a suit. Next, it can only be granted in specific matters. It can only be granted in specific matters relating to properties, family disputes, etc. Properties, family disputes, etc. बस काफी है. Done. चलो जी. Thank you so much, sir. So are we? लो भाई, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन पढ़ना यार. अब ये क्वेश्चन मुझे ना ऑनेस्टली थोड़ा अनजस्टिफाइबल लगा. एक्चुअली आप दिसंबर 24 का पेपर देखोगे ना, सॉरी जून 25 का, इट्स अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड पेपर. व्हाट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड पेपर? मतलब इन्होंने ना, जैसे नॉर्मली पेपर में ऐसा होता है ना कि यू फाइंड क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी पॉसिबल चैप्टर. ये एक ऐसा पेपर है जिसमें देर आर ओनली फ्यू चैप्टर्स जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं. आप ऐसे अगर लॉजिकली देखोगे तो चैप्टर 3 और चैप्टर 1 मेजर क्वेश्चंस आए. अच्छा, अब इसमें आपका ये अभी आप लोगों ने डिक्लेरेटरी डिग्री लिखा चैप्टर 3, माइनर वाला पूरा के पूरा. आई थिंक दैट्स अ 15 मार्क क्वेश्चन. क्या ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर 3 का क्वेश्चन है? कल भी हम लोगों ने एक आध कोई क्वेश्चन किया दैट वाज फ्रॉम चैप्टर 3. कुछ तो लिख रहे थे कल, मैं लिखवाते वक्त यही बोल रहा था कि ठीक है. तो ना, they've asked only from few chapters. अच्छा, 7 8 प्रीवियस अटेम्प्ट्स में आप देखते हैं तो काफी सारे क्वेश्चंस थे, बट इस अटेम्प्ट में उन चैप्टर से कोई क्वेश्चन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब लिटरल सेंस में जीरो. सो सेकंड चैप्टर, 7th और 8th तीनों से कुछ भी नहीं पूछा हुआ है. इट्स अ वेरी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड पेपर. अब किन स्टूडेंट्स को दिक्कत आई होगी ना, गलती से अगर इन चैप्टर्स में से जैसे बहुत बहुत क्वेश्चंस आए, अगर कोई ऑप्शन पे रख के खेल. मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, स्कोर्ड 5 मार्क्स इन ऑल क्वेश्चन. बाबू टोटल 5 बोल रहा है कि 5 में से 5 बोल रहा है? माइनर के आंसर्स बहुत कम थे तो क्या लिखना था? लिखवा तो ना भी. एक्चुअली इसके लिए यू डोंट इवन नीड टू नो द प्रोविजंस. ये ना कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस है. मतलब बेसिक्स ऑफ माइनॉरिटी सबको पता है. मोइरी बीवी धर्मदास को सबने पढ़ा हुआ है, राइट? माइनर 18 के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड अब इनिशियो, सेक्शन 72 अप्लाई होता ही नहीं होता है. मतलब वही बेसिक ये है. ऐसा नहीं कि कुछ बहुत हाई फंड पूछा है. एक बार चेक करते हैं. कैन वी टेक इट लाइट फॉर चैप्टर 3 एंड 1? अच्छा, देख, आज तूने मूर्खों वाली बात कर दी बेटा. अगली बार तूने वापस से किया तो मैं तेरे को ना बद्दुआ दे दूंगा. क्यों? कैसे पता कि रिपीट नहीं करेंगे? है ना, वो रिटायरमेंट बाय रोटेशन जैसा थोड़ा ना कि इस बार चैप्टर से अगली बार दूसरे चैप्टर सेम वापस आ सकता है ना. अपन फाइनल में आ गए, एग्जीक्यूटिव पास करके आए, कैसे चलेगा बेटा ऐसे? चल, क्वेश्चन पढ़. 15 में से 5 मिले? ओ माय गॉड, थोड़ा तो गलत कर दिया आपके साथ. चल भाई, उठ बरे, देख जरा. A minor is the sole owner of a property inherited from his father. ए माइनर है और उसके पास बेसिकली ये प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में आई है. ही डिसाइड्स टू मॉर्गेज द प्रॉपर्टी टू बी अ मनी लेंडर टू सिक्योर अ लोन ऑफ ₹50,000. तो ए के पास कोई प्रॉपर्टी है इनहेरिटेंस में. इनहेरिटेंस का यहाँ पर कोई यूज नहीं है. अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ?
थोड़ा तुम सिंपैथाइज करना बंद कर दो, है ना? उसने कुछ ब्लंडर किया होगा, इसलिए उसको मार्क्स कम मिले। अगर तुम सेम ब्लंडर करोगे तो तुमको भी मार्क्स कम मिलेंगे। तो अगर ऐसे दिन नहीं देखना है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में कोई तुमको सिंपैथाइज, तो बेटर है यहाँ पे ध्यान दे, +1 करें बदतमीज। और ये व्हाट तो ऐसे लिख रहे हो जैसे आप उसको बचपन से जानते हो कि उसने इतने इंटेलेक्चुअली क्लासी आंसर्स, लेकिन शिट, इंस्टीट्यूट कितनी खराब, इतना दिल से बुरा लग रहा है खुशी, तो तू उसका पेपर ले। बकवास बंद करो बेवकूफ, इधर देखो। और ये देखो, ये मिसराना आई है, उस बेचारे ने क्लियरली कहा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, मुझे 5 मार्क्स मिले। ये आई है 100 में से 5 बहुत टाइम पास। तो माइनर को प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिली, ही डिसाइड्स टू मॉर्गेज द प्रॉपर्टी टू बी अ मनी लेंडर टू सिक्योर अ लोन ऑफ 50,000। तो बेसिकली उसने क्या किया, कि भाई 50,000 रुपए का लोन है ना, और प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके 50,000 रुपीज का लोन। अच्छा, एट द टाइम ऑफ द ट्रांजैक्शन बी इज अवेयर, ओ माय गॉड, दैट ए इज अ माइनर बट स्टिल प्रोसीड्स विद द मॉर्गेज डीड। तो उसको पता है कि ये माइनर है लेकिन फिर भी उसने मॉर्गेज डीड बनाई। आफ्टर रिसीविंग अ पोर्शन ऑफ द लोन अमाउंट, ए रिफ्यूजेस टू पे बैक द लोन एंड फाइल्स अ सूट क्लेमिंग दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज void as he is a minor। बदतमीज निकला माइनर। तो उसने पहले जब रीपेमेंट की बात आई तो उसने लोन रीपे करने से मना कर दिया फर्स्ट, और दूसरा अब वो बोल रहा है कि साहब मैं तो माइनर था, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, मेरे को मेरी प्रॉपर्टी वापस चाहिए। बी आर्ग्यूज दैट सिंस ए हैज बेनिफिटेड फ्रॉम द ट्रांजैक्शन। अच्छा, आप लोगों ने सप्लाई ऑफ नेसेसरीज है ना, 72 शायद पढ़ा होगा, आई थिंक, हाँ 72, सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। तो माइनर्स से नहीं, आप माइनर के एस्टेट से पैसा वसूल कर सकते हो कब, व्हेन इट इज अबाउट सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। अच्छा, यहाँ पर उसने प्रॉपर्टी मॉर्गेज की, 50,000 रुपए लोन ले लिया वहां से, इज दिस अबाउट सप्लाई ऑफ नेसेसरीज? नहीं। अच्छा, इसी की जगह कोई मेडिकल कंडीशन होती कि भाई उसका हार्ट फेल हो गया, अब उसको अपना इलाज कराना है और अगर इलाज नहीं करवा पाए तो गया। सो अगर इफ इट इज फॉर सप्लाई ऑफ नेसेसरीज, इन दैट केस द हॉस्पिटल डॉक्टर हैज अ राइट टू क्लेम रेमेडीज, राइट, तो आप वहां पर पैसा क्लेम कर सकते हो। यहाँ पर सप्लाई ऑफ नेसेसरीज वाली कोई चीज है क्या? नहीं, इसने तो लोन लिया 50,000 रुपए का, कोई सप्लाई ऑफ नेसेसरीज है क्या? नहीं। कॉन्ट्रैक्ट वाइड, आपके पास कोई भी राइट नहीं है टू रिकवर दिस पर्टिकुलर मनी। ठीक है, हाँ जी, चल आगे बढ़े। He must either return the money received or the contract should be specifically enforced against him. He further contends that A's guardian has ratified the contract making it binding. So even if someone is ratifying the contract, makes no difference, right? मतलब minus contracts are void ab initio, उसका वो clear state है। चलो, based upon the case, answer the following questions. Critically analyze the competency of parties in contract law using the problem as a case study. How does the Indian Contract Act address the validity of agreements involving minors? So basically, आपको minor contract के बारे में you have to express your views. Examine the legal and equitable considerations governing the enforceability of a minors contract. Under what circumstances can specific performance be sought in such cases? तो कौन से केस में माइनस कॉन्ट्रैक्ट आप एनफोर्स कर सकते हो? जैसा भी मैं बोल रहा था, इफ इट इज अबाउट सप्लाई ऑफ नेसेसरीज, इट कुड बी एनफोर्स्ड अपॉन। assess the significance of knowledge of age in contractual dealings। पता हो ना पता हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कोई भी राइट as such नहीं बनता यहाँ पर। What legal doctrines have precedents apply? Would the legal position change if we was unaware of his age? And how does this impact the principle of void contract? अच्छा, B की responsibility थी, while dealing with A, he should have at least checked whether the other party is competent to enter into contract. He did not. It's an ignorance of law, right? So it's a mistake of fact as well as law. तो कोई भी remedy यहाँ पर ऐसे नहीं। Am I clear about this? Everyone. Simple question था, ज्ञान देना है आपको बेसिकली, है ना? आंसर लिखते हैं अभी। चलो स्टार्ट करो दोस्त, जल्दी से। ए, ये क्वेश्चन हो जाएगा खत्म अपना फटाफट। तो आज आपके 15 और 15 30 मार्क्स का आज हो जाएगा। तो कल अपना सिर्फ पार्ट बी बचता है, विच इज अगेन 30 मार्क्स। तो कल आपका जून 25 कंप्लीट हो जाएगा, है ना? और परसों से हम दिसंबर 24 स्टार्ट कर देते। आई शुड क्लियर इन दिस अटेम्प्ट, टेल मी व्हाट टू डू। बस दोस्त, आंसर्स जैसे लिख पा रहा हूँ ना उसी टाइप के लिख के आना है, you'll clear। चल, फर्स्ट पॉइंट,
Yeah, how does the Indian Contract Act? Okay. Any person who's not attained the age of 18 years, any person who's not attained the age of 18 years is considered to be a minor. जी sir. Considered to be a minor, and a minor is incompetent to enter into a contract, and a minor is incompetent to enter into a contract, and therefore minors contracts are and therefore minors contracts are considered void ab initio. Contracts are considered void ab initio. तो stop. In the present case, क्या क्या है सतमीज ने in the present case, B, knowing that A is a minor, B knowing that A is a minor, still entered into a contract with him. Still entered into a contract with him. Entered into a contract with him. And therefore, the contract cannot be enforced, and therefore a contract cannot be enforced against a minor. Against a minor. Mhm. Second, क्या examine the legal and equitable considerations governing the enforceability of a minors contract. ठीक है, लिखना भाई. Second, since a minors contract is considered void ab initio, since a minors contract is considered void ab initio, comma, it can never be enforced against him. It can never be enforced against him. Never be enforced against him. First off, even when the minor turns major, even when the minor turns major, uh, the contract cannot be enforced upon. The contract cannot be enforced upon. Cannot be enforced upon since enforced upon since he was a minor at the time of he was a minor at the time of
entering into the contract. Full stop. However, however, if the contract was for supply of necessaries, however, if the contract was for supply of necessaries, essential to him for life, essential to him for life, supply of necessaries, essential to him for life, him for life, comma, the contract can be enforced in a way, the contract can be enforced in a way that for such, that for such supply of necessaries, that for such supply of necessaries, comma, minor's estate could be held liable, minor's estate could be held liable, but not the minor. Minor's estate could be held liable, but not the minor. Done. आगे देखें. Assess the significance of knowledge of age in contractual dealings. तो एज से मतलब एज के बारे में जानकारी हो कोई नहीं हो कोई फर्क पड़ता है क्या? What legal doctrines and precedents apply when one party knowingly enters into a contract with a minor? So जानते हुए कि minor था. Would the legal position change if B was unaware of A's age? And how does this impact the principle of void contracts? अच्छा, अब इसमें सेम हम लोग जो बात करते हैं ना कि अगर आपको एज के बारे में जानकारी नहीं थी, मतलब माइनर ने गलत बताया, ठीक है, बट इफ इट वाज फॉर सप्लाई ऑफ नेसेसरीज, जो भी हम लोगों ने सेम पार्ट बी में लिखा ना, सेम उसी से कनेक्ट करके आपको लिखना है कि उसने मिसरिप्रेजेंट किया, माइनर ने अपने आप को मेजर बताया और बाद में जब आप उससे पैसे लेने गए तो उसने बोले हाँ हाँ मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो माइनर हूँ, राइट? सो इन दैट केस यू हैव अ राइट टू क्लेम कॉम्पनसेशन बट ओनली फ्रॉम हिज एस्टेट. आप अदरवाइज माइनर से पैसे रिकवर नहीं कर सकते, है ना, उसके एस्टेट से जरूर रिकवर कर सकते. लिखो जरा. In case if B was aware of, in case if B was aware of minor's age, and knowingly he enters into a contract with him, and knowingly he enters into a contract with him, enters into a contract with him, he loses his right absolutely, he loses his right absolutely to claim compensation under any circumstances. Compensation under any circumstances. However, however, if he was unaware of the age of the other person, he was unaware of the age of the other person, and unknowingly enters into a contract with him.
and unknowingly enters into a contract with him, comma, it does not make the contract valid. It does not make the contract valid. Make the contract valid as the state of law is pretty clear. The state of law is pretty clear that the minors contracts are void from the beginning. Void from the beginning, and only in case of supply of necessaries, comma, money could be recovered from the estate of the minor. Money could be recovered from the estate of the minor. Done? चलो भाई, हो गया ये? तो ये आपका पार्ट भी कंप्लीट हो गया है ना। 70 मार्क्स का पेपर, हाँ CMADD होगा। 70 मार्क्स का ही कंप्लीट हो गया। इनफैक्ट हम लोगों ने ऑप्शनल क्वेश्चन भी किया, मतलब 85 मार्क्स का पेपर आप लोगों ने जल्दी सॉल्व कर लिया। डन। चलो इसके आगे वाला पार्ट अब कल कंटिन्यू करते हैं। कल पार्ट बी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय।